Hello students, I'm back again with Indian economic development. In my previous lectures, we have completed macroeconomics full. You can just see on my YouTube channel, macro and micro both are being completed on my YouTube channel. Now I will be starting with the lectures of Indian economic development. मतलब अब से मैं Indian economic development के related videos create कर रहा हूँ. See, basically Indian economic development is now the part of 12th economics, CBSE. Before it was part of 11th eco. Okay, when we were students or recently in 2019-20 CBSE took the change of this. So before it was a part of 11th economics. 11th eco में पहले आपका एक पोर्शन रहता था स्टैट्स का और एक पोर्शन रहता था आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. अब 12th में अगर मैं बात करूं, अब 12th में पहले जो चलता था वो कॉम्बिनेशन चलता था माइक्रो और मैक्रो का. एंड नाउ दे हैव चेंज्ड इट. मींस अब इंटरचेंज हो चुका है. नाउ पर्टिकुलरली माइक्रो हैज बीन इन taken under 11th economics. Means micro आप अभी 11th eco में पढ़ोगे and stats is there and your ID has been now shifted to 12th economics. Means it will be macro plus ID. So let us start with the Indian economic development. Basically, students, better in this case, you are have to only see कि आपकी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए थे. व्हाट चेंजेस वर देयर बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. In this unit, we will be seeing that what changes were there before and after. So let us first understand how many chapters are there in this one individual unit. So in this particularly first individual unit, as you can see in the PowerPoint presentation, that is development experience 1947 to 1990 and then reforms of 1991. मतलब जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसको बोला जाता है LPG, that is liberalization, privatization and globalization. So these were the particularly main concepts of the NEP. Now in this particular unit of Indian economy, you will be having three chapters. This is your first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. Then second chapter is related with planning and common goals of 5-year plannings. It is having a time period of 1950 to 1990. And the economic reforms from 1991 that was started over 1991 से अभी तक के latest update तक हैं, because in this chapter now GST and demonetization has also been taken as the topics by CBSE. मतलब इस particular topic में अब GST और demonetization भी यूज हो चुका है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन अभी अभी इम्प्लीमेंट हुआ है. आपका डिमोनेटाइजेशन केम इन द ईयर 2016 and in 2017 आपका जीएसटी आ चुका था. So in 2016 and in 2017 ये recent topics हैं जो अभी अभी develop हुए हैं by the CBSE and we have to focus on this particular topics also. So let us start. Before starting, let us understand how much mark unit it is. It is basically students a 12 mark unit, as I already told you. Okay, so 12 marks की ये unit आती है. इसमें तीन chapters का bifurcation आप equally नहीं मान सकते. Depends on CBSE that what particularly plan is been there. So अभी तक announcement नहीं हुआ है about the timetable which is upcoming. Maybe from May or June. May is the upcoming timetable. Let us see, but before that, kindly take the consideration. Let us start the chapter. That is Indian economy on the eve of independence. That is your chapter 1 of ID. Okay. अब एक एक करके इसके टॉपिक्स पे अपन फोकस करते हैं. Now, what was the scenario before British entered India? Means आपकी कंट्री को हम बोलते हैं सोने की चिड़िया बोला जाता था. Why? We Indians means India was been known as a golden eagle. क्यों? Because India was very prosperous economy. अब ये prosperous बनी कैसे? First and foremost, why? Because at that particular time we were independent. We were not having the British Empire, self-reliant company, अपनी country, and then we were a prosperous economy. That's why हमें बोला जाता था सोने की चिड़िया. We will be considered as the golden eagle. That was the scenario when before British rule. And then we also been were the agri
agrarian economy. Now, what is agrarian economy? Basically, जहाँ पे major purpose या major persons जो country के हैं वो employed हैं agriculture sector में. अगर ऐसा केस है कि जहाँ पे major employed persons, मतलब take for the example your major population is involved in agriculture, so that economy will be considered as an agrarian economy. So agriculture was the main source of livelihood for about two-third of your population at that particular time. ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, ऐसा नहीं कि particularly your service sector was not there, but major sector which was being covering at that particular moment is agricultural sector. Agriculture sector है. See, ID में basically it's purely theoretical. आपके लिए पूरा theory subject होगा. उसको interestingly आप तभी समझ सकते हो when you will be reading the notes and the books. Books थोड़ा refer नहीं हो सकते. You can see the videos and will be adding all the particular important points in my videos so that you will be able to get that particular chapter very easily. So now, second, India was also known as for what? India was also known as for its well-known handicrafts. Handicraft industry बहुत famous थी. We were having high standards of craftsmanship. मतलब आप समझ के चलिए जो क्राफ्टमैन्स यहाँ पे डेवलप हो रही थी उनकी एक्सपोर्ट्स डिमांड बाहर मार्केट में आउट ऑफ इंडिया वाज देयर. सो ये सिनेरियो था बिफोर योर ब्रिटिश रूल, मतलब आप ब्रिटिश रूल के पहले का सिनेरियो. अब अगर अपन देखें जब ब्रिटिश रूल एम्पायर आया then what changes were there? However, during the British rule, means during British rule आपके पास क्या क्या changes आए? First change that was being focused by the British, that they were focusing on their own economic interest. उनको इंडिया के इंटरेस्ट से मतलब नहीं था. They were promoting their own interest. उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था. They were focusing on their own profit. They were not focusing on the development of India. They were not focusing on the economic development as well as social development of our country. उनकी पॉलिसी में क्या था कि भैया हमें अपना चाहे जितना प्रॉफिट हम कमा लें, दैट इज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. मींस दे वर फोकसिंग ऑन देयर ओन इंटरेस्ट. वो किसी और पर्टिकुलरली कंट्री पे, जैसे मेनी ऑफ द कॉलोनीज वर देयर एट मोमेंट ऑफ दैट टाइम. ब्रिटिश की बहुत सारी कॉलोनीज होती थी. वन ऑफ देम कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. तो उनका मेन टारगेट ही होता था कि दे विल बी ओनली प्रमोटिंग देयर बिजनेस, देयर कंट्री एंड देयर ट्रेड. सो वी बिकेम व्हाट बेटर, वी बिकेम a feeder economy. हम क्या बन गए? feeder economy बन गए. Now what is the meaning of feeder economy? You are taking raw materials from our nation. Means merely we are supplier of what? Merely we are suppliers of raw materials and we are consumer of the finished products जो आपके यहाँ से आ रहा है. Take the simple example. जैसे raw material मेरे यहाँ से गया. ओके, नाउ रॉ मटेरियल किसके पास गया? ब्रिटेन के पास. ओके, ना वहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले से ही डेवलप है. अब वहां से आपके पास फिनिश गुड्स आ रहे हैं. नाउ दीज फिनिश गुड्स आर मोस्टली चीप क्योंकि ये मशीन से बनाए गए हैं. ओके, तो ये फिनिश गुड्स आर गिविंग अ टफ कंपटीशन टू दोज प्रोडक्ट्स जो वहां पे डेली वर्कर खुद अपने हाथों से बनाता था इन केस ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन. So mostly these finished goods were of very low cost and low rupee. जैसे अभी अपन देखते हैं चाइना का माल आता है तो वो बहुत कम कॉस्ट का होता है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री से बनाया गया है. वही अगर चीज मैं यहाँ पे हैंडमेड बनाऊं तो दैट विल बी हैविंग अ मोर कॉस्ट, बट क्वालिटी मैटर्स. सो इन दैट केस वहां पे भी यही चीज थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना फिनिश गुड्स बेचते थे एंड दिस वाज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू दी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. उनके लिए उनकी इनकम बहुत कम होती जा रही थी एंड दे टर्न्ड आवर इकोनॉमी एज व्हाट? उन्होंने हमारी इकोनॉमी को टर्न कर दिया एक फीडर इकोनॉमी में. मतलब हम आपसे सिर्फ रॉ मटेरियल लेंगे और आपको सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स देंगे. वी आर ओनली देयर. सो हम उनके लिए क्या बन गए थे? एक प्रॉफिट मेकिंग कंट्री. We were only just like that. We were only a profit making country for them. उसके अलावा हम ब्रिटिश एम्पायर के लिए कुछ भी नहीं. That was the major task. Now, what was the particular? However, during the British rule, every sector of Indian economy was affected. अब अपन देखेंगे आगे sectors कौन कौन से हैं. There are demographic profiles, their occupational structure is there. Then उसके बाद occupational structure के बाद we have your इंडस्ट्रियल सेक्टर, वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड. मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक सेक्टर को अफेक्ट करा. इट अफेक्टेड द ऑल सेक्टर्स
in that particular time period. Okay, so in that case आपका particularly ये concept समझ में आता है, near about they ruled for 200 years. तो आप समझिए when they were ruling our country near about for 200 years, तो हमारी demographic profile कैसे particularly डेवलप हुई होगी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या रहा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रहा होगा, फॉरेन ट्रेड क्या रहा होगा. Basically, in today's lecture, I will be focusing more on agricultural sector. Today's lecture one, अपन उसको ज़्यादा heavy नहीं बनाते हुए, सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, अपन फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. So, आ जाते हैं अब इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सारे सेक्टर्स आपको पढ़ने हैं in this particular chapter. First is your agriculture sector, second is industrial sector, third is foreign trade, fourth is your occupational structure, and fifth is demographic profile. तो अभी अपन किस पे फोकस हो जाते हैं? Today we are focusing on agricultural sector alone. Okay, agriculture sectors में क्या क्या changes थे? Whatever changes we will be seeing. First, क्या था state of agriculture? First, अगर आप देखा जाए, so how many percent of country population was there? Near about, that is not exact, nearly approx 85% of your country was mostly living in villages, and they were deriving their livelihood directly or indirectly from agriculture. अब देखो, directly का मतलब क्या है? यहाँ तो खुद farmer है. Indirect का मतलब suppose take I am a trader. Okay, so even indirectly मैं उसी से ले रहा हूँ ना. I am getting the supply from farmer. और मैं एज अ ट्रेडर वही गुड्स दे रहा हूँ जो मुझे फार्मर दे रहा है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवर कंट्रीज इनकम और कैन बी सेड एज योर जीडीपी, it was coming directly from agricultural sector. But agriculture sector was stagnant. What is the meaning of stagnant? There was no growth. उसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख ही नहीं रही थी. क्यों नहीं दिख रही थी? व्हाट वाज द रीजन? ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी. क्यों? क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू, यहाँ पे मेजर फोकस ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू टेक इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी. वो फीडर इकोनॉमी ही कन्वर्ट करना चाहते थे इंडिया को, उसे डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं ले जाना चाहते थे. That was the major drawback. Now, coming to the state of agriculture sector, जिसके अंदर अपन तीन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको बोला जाता है जमींदारी सिस्टम भी. नाउ जमींदारी सिस्टम क्या होता है? अगर आपने पिक्चर लगान देखी होगी, एवरीबडी हैज सीन लगान मूवी मोस्टली. तो लगान सिस्टम में आपने जब देखा होगा, जब आमिर खान इज हैविंग अ वर्ड विद दैट पर्टिकुलर ब्रिटिश पर्सन, कि आमिर खान भाई साहब आए और उन्होंने उस पर्टिकुलर पर्सन से लगान माफ करने को कहा. तो उन्होंने कहा कि हम माफ करेंगे अगर आप हमारा क्रिकेट मैच जीतते हैं. आपको पूरे मूवी के व्यूज आधे आ जाएंगे. तो लगान माफ करने के लिए उसने बोला था कि हम 3 साल का लगान आगे माफ कर देंगे अगर आप हमसे क्रिकेट मैच में जीत जाते हो. तो दैट इज फोकसिंग ऑन दैट जमींदारी सिस्टम, अभी हम देखेंगे. फिर आता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, मतलब आप पे कमर्शलाइजेशन थोपा गया. Third is low level of productivity, means your productivity not was not increasing. It was productivity मतलब क्या होता है? आज अगर मैं 10% ग्रोथ कर रहा हूँ, फिर आने वाले साल में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 15% हो, एटलीस्ट 16% हो, एटलीस्ट 17% हो. तो वो ग्रोथ ही नहीं हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में. वाई? बिकॉज देर इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. चलो अब एक एक करके इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. दैट फर्स्ट लेट अस सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम. व्हाट वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम? सबसे पहला, जमींदार्स वर देयर फॉर व्हाट पर्पस? जमींदार्स वर देयर टू एक्सप्लॉइट. टू whom? एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स. किसको कल्टीवेटर्स? बेटा जो वहां पे अपॉइंटेड रहते थे आई इम्पोजिंग द लगान्स. कल्टीवेटर्स की जमीन भी नहीं होती थी, कल्टीवेटर से काम किया जाता था. ऐसा होता है और उनको फिर लगान देना पड़ता है. तो जमींदार्स वर देयर टू एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स बाय प्रोवाइड बाय वो पोसिंग देम लगान, क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था. डेट फॉर डिपॉजिटिंग द स्पेशल सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड. अब अगर आपने वो डेट लूज कर दी, तो हो सकता है कि आपके पास जमींदारी के जो राइट्स हैं वो भी चले जाएंगे. दैट वाज देयर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि मेरे पास अगर लगान टाइम टू टाइम नहीं आया, तो ये जो जमीन है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर कर देगी. बेसिकली जमींदारी सिस्टम वाज अ 3 tier सिस्टम बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट. Okay, students.
ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे थी, जमींदार थे, और जमींदार के बाद आपके थे कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मींस दोज वर द टिलर्स ऑफ द सॉइल, इनको बोला जाता है दे आर कंसिडर एज द सॉइल टिलर्स। सो ये पर्टिकुलर पर्संस क्या कर रहे थे, दीज वर मेनली कल्टीवेटिंग द फार्म्स एंड दे वर गिविंग लगान टू जमींदार, एंड जमींदार अगेन वर गिविंग लगान टू ब्रिटिशर्स। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, कल्टीवेटर खुद ऑन कर रहा है और उसको लगान दे रहा है। उन्होंने क्या करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि अगर मुझे उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से लगान नहीं मिला, उस समय मॉनेटरी सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लगान किसे देते थे बेटा, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, मीन जो भी आपके लैंड में प्रोड्यूस होगा उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा, तो लगान वाज दैट। तो इन दैट केस profit accruing out of these agriculture sector directly went to zamindar instead to the cultivators, and they do nothing to improve the condition because उनको भी लगान देना पड़ता था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। ओके, सो दिस वाज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ योर जमींदारी सिस्टम। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड पॉइंट व्हिच आई वाज डिस्कसिंग इज फोर्स कमर्शियलाइजेशन। मतलब हम पे कमर्शियलाइजेशन थोपा गया। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मींस इन दिस केस हम कमर्शियलाइजेशन पे नहीं जाना देंगे। व्हाई, बिकॉज वी वर फोकसिंग ऑन फूड क्रॉप्स। बेटा आप क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, ओके, अंडरस्टैंड हियर। क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैश क्रॉप्स एंड सेकंड इज फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, wheat, rice which you can eat, okay, and cash crops क्या होंगे, maybe suppose indigo, silk, jute, cotton, जिनको आप खा नहीं सकते, बट इनका भी इंपॉर्टेंस है फॉर मेकिंग दी सेक्टर एज अ कमर्शियलाइज सेक्टर। सो क्रॉप्स वर देयर, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था बेटा, उनको फूड से मतलब नहीं था, फूड की सप्लीमेंट्स तो वहां पे भी अच्छी खासी हो रही थी, उनको मतलब था रॉ मटेरियल से, जो ये है इंडिगो, सिल्क, जूट, कॉटन, उन्हें ये चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, दे शिफ्टेड द एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, एंड दिस वाज नोन एज फोर्स कमर्शियलाइजेशन। मतलब फार्मर को जानबूझ के बोला जाता था कि यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। इट वाज गिवन, दे फोर्स्ड the commercialization of agriculture in which they encourage the production of cash crops instead of food crops। मतलब फूड क्रॉप्स की वहां पे क्या हो गया, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वी वर फेसिंग फेमाइंस। व्हाट वाज फेमाइंस, भुखमरी, क्योंकि भैया फूड क्रॉप्स ही नहीं है, आप कैश क्रॉप पे कैश क्रॉप बनवाते जा रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट तो झेलना पड़ेगा ना इंडियंस को। एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स वी वर सफरिंग व्हाट, वी वर सफरिंग फ्रीक्वेंट फेमाइंस, एज आई टोल्ड यू कि फेमाइंस वहां पे भुखमरी आना शुरू हो गई, बिकॉज कैश क्रॉप पे कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप से मैं अपनी भूख तो ना मिटा सकता हूँ, उससे मैं अपनी मेरी भूख तो नहीं शांत होगी। दैट इज द मेन कॉज एंड दिस वाज द इम्पैक्ट व्हिच एवरी इंडियन एट दैट मोमेंट वाज फेसिंग। Now coming to is why there was low level of productivity, मतलब आपका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था, क्या रीजन था कि प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा है। पहला, योर एग्रीकल्चर सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन, सबसे पहला इम्पैक्ट ये था। नो मीन्स ऑफ इंसेंटिव्स, कोई इंसेंटिव्स नहीं दे रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कहाँ ग्रोथ मिलेगा। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, योर टेक्नोलॉजी इज नॉट बीइंग अपग्रेडेड, वो और से और कम होती जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी आएगी कहाँ से। नेक्स्ट वॉज योर लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, आपके यहाँ पे डैम्स बने हुए नहीं थे उस मोमेंट पे, नाउ वी हैव डैम्स एंड अदर थिंग्स। At that moment, we were not having dams. At that time, we were not having the proper irrigation system or proper irrigation chalan. So in that case, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली थी। And next was negligent use of fertilizers. आज तो भैया fertilizers और pesticides तो ऐसे यूज होते हैं जैसे इनके बिना तो फार्मिंग कहीं नहीं जाती है, होती है इनके बिना फार्मिंग, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, which is without any chemicals and without any fertilizers। सो वहां पे बेटा फर्टिलाइजर से यूज नहीं कर रहे हो, तो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाई। दैट वाज द मेजर टास्क। सो दिस वाज योर थर्ड पॉइंट व्हिच इज फोकसिंग ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चलो, as I told you in this lecture, I will be focusing only on agriculture। Thank you students for listening today's lecture। और आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब my channel for more updates on economics। अभी मैं इकोनॉमिक्स लेक्चर पे फोकस हूँ। इन द नियर फ्यूचर
I will be posting business studies as well as accountancy lectures of class 12th very soon for your upcoming board examinations. Okay, so do subscribe my channel, do share it with your friends because it's totally free and they will also get the knowledge. Thank you, students, for listening today's lecture.